हाय गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रकाश चौधरी, मेरे साथ है एनोक भाई। एंड आज हम बात करने वाले हैं यामाहा के एरोक्स 155 स्कूटर के बारे में। तो ये स्कूटर इन्होंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले लिया था, राइट? Almost, yeah, it's almost a month now. तो फर्स्ट स्कूटर था हमारे बाइकिंग ग्रुप में। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है ये स्कूटर के साथ, क्या क्या इनको दिक्कत आई है, एंड कितना ये एंजॉय कर रहे हैं स्कूटर को। एंड जो लोग लेना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू फ्यू आर्टिकल्स जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि इसको आप टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लॉन्ग राइड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सो थैंक यू सो मच। Thank you, Prakash bhai. इससे पहले कि मैं आपको कुछ सवाल पूछूं, बताओ कि कैसा है आपका एक्सपीरियंस, देन आई विल हैव फ्यू क्वेश्चंस जो नॉर्मली रहते हैं। Experience is lovely. Firstly, thank you for helping me get this bike. So yeah, I always wanted to get maxi scooters. I always liked maxi scooters. I used to drive these scooters majorly in like Thailand or Europe every time I was traveling. So I was in love with them. But unfortunately in India we don't have any maxi scooters as such. So I was waiting. I thought maybe if Honda Forza comes, like Honda, that 350 Forza or something else comes, and then they also launched the BMW C400 GT. But they are way over budget, and obviously not value for money because they are coming as CBE units. So when Yamaha launched this, or when I came to know that Yamaha was going to launch this, my eyes were set on this bike. And the thing is, it's a very, very popular bike in Southeast Asia, like Thailand and Vietnam, and a lot of other countries. So In fact, I have watched many videos. Then I thought, at least some scooter they launched, Suzuki launch किया था ना एक उसका कुछ नाम था Bergman. Bergman, yeah. So that's when I thought, there are some hopes Yamaha कुछ लेके आएगा। Yeah. Honda तो वो लोग बहुत लेट हो जाते हैं। It was a very exciting news for me, at least. Initially, actually, I opted for Ola, अच्छा। the S1 Pro. I booked it. But then I had to cancel it because there was no infrastructure in our community. So, and there was no line of sight in terms of whether they are going to set up the infrastructure or not. Almost I'm 100 kilos. If that Ola bike, I look like I'm sitting on a rat. So, I thought I need something is more powerful That and suits your big. personality. So, yeah. हो सकता है कि आपको वीडियो में ये थोड़ा छोटा दिखे, बट रियल लाइफ में ये बहुत बड़ा स्कूटर है। एंड फॉर श्योर जब ये बाहर लेके जाते हैं, स्पेशली यू वर सेइंग दैट जिम में अगर लेके जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि कौन सा स्कूटर है। Yeah, it actually has the R15 engine. Yeah, slightly detuned. Yeah. So this one has about 15.8 odd bhp. The R15 has around 17 or 18 bhp. It's a water cooled engine. You have a separate radiator. So basically, it has all the parts of a motorbike, unlike a scooter. And you have your instant torque. They've reduced the horsepower, but the overall initial torque or the acceleration of the bike is much higher than a bike. सो डिड यू फेस एनी इश्यूज? जैसे बड़ा स्कूटर है, ऑलमोस्ट 130 किलो का है ना, 125 130 किलो। तो चलाने के टाइम पे क्या होता है? आपको तो मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाउ अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स? किसी ने चलाया है? One of my friend rode it, took a short ride, but he really loved the bike. The way it delivers power. And it's very well balanced bike. Unlike, so most of the scooters that you have like Activa and all those are more rear set. The weight is all rear set. You have a fuel tank in the back, engine is in the back, everything is in the back. So front is very light. Here the center of gravity is in the center of mass. You have the engine is in the center. Well distributed. Yeah, the fuel tank is in the center. So you have very good balance. And you have a 140 section rear tire, 14 inch. वही अपना R15 का Same as R15, and then 110 section front tire. सो आपको कुछ मनोवर करने में, सिटी में चलाने में ऐसा हैवी वगैरह कुछ? Not at all. Actually, it's very flickable, very light. Feels really light. Also because it's not a metal body. Because they've tried to reduce weight by using all the plastic body, but the good thing about the plastic body is that the parts are very easily replaceable. Yeah, you can put graphics whatever you want, but if it's a metal body, then you have to do denting and painting and all of that headache. I think 3 more colors we have, 2-3 color और Yeah, there is a grey and red, and there is a blue. Yeah, blue and grey. And this is the MotoGP version. So what was the on road you paid? I played close to about 1.6. 1.6. For this one.
दिस इज 1,30,000 तो हैदराबाद में इसका एक शोरूम है, ऑलमोस्ट 25-30,000 और इंश्योरेंस एंड ऑल दैट करके, तो 1.60 आपको पड़ा ऑन रोड. सो डिपेंड्स अगेन, अगर आप कोई दूसरी सिटी से हो, दूसरे स्टेट से हो, तो रोड टैक्सेस कैसे रहते हैं उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा. सो यू हैड नो इश्यूज विद द स्कूटर सो फार? Not at all. No. I mean, this is a Yamaha engine, so bulletproof. इन्होंने ज़्यादा चलाया नहीं, आई थिंक हार्डली 200. Yeah, I think I've done about close to 300 now. But yeah, I really love, every day I used to take either my bike or I have a Ninja 1000, so either I used to take that bike or I used to go by car to the gym every day. But now this is almost my daily commuter to the gym. Ninja 1000 चलाने के बाद में इसका क्या ही फील Feel ही होगा. नहीं होगा. सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि इफ़ आई नीड टू बाय दिस स्कूटर आई नीड टू नो ऑल दिस डिटेल्स, एंड स्पेशली फॉर द पीपल दोज आर प्लानिंग टू बाय इट. कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछते हैं लोग, कमेंट्स में पूछते हैं, भाई इसका एक वीडियो बनाओ, भाई इसका एक वीडियो बनाओ. सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ मी टॉकिंग अबाउट द स्कूटर, सिटिंग ऑन द स्कूटर एंड देन टॉकिंग अबाउट, आई थॉट कि लेट द ऑनर टॉक अबाउट इट एंड लेट्स सी व्हाट ही सेज. सो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि वाई this scooter, as you said you wanted to go for a maxi scooter, and something which is at least more powerful than the ongoing scooters in India, and who do you think should buy this? So this is not a practical scooter. I mean, you can use it for practical purposes. Like basically, you look at any scooter in India right now, an Activa or a Bergman, whatever that scooter is, you have a place to put stuff, right? So people usually go around, to a market or anything. You can put your stuff and carry it. But this is more, sport oriented. So I mean, a maxi scooter anyway will have a center tunnel where you have fuel and everything. So you don't really have the space there. Second, I mean, but you have a lot of space under the seat, right? So because there's no fuel tank and all that there. फ्यूल टैंक तो बीच में है ना इसका? हाँ, फ्यूल टैंक यहाँ पे है, तो अब पूरा जो भी स्पेस आएगा आपको वहीं पे वो आपको बहुत स्पेस आएगा अंदर. आई एम नॉट श्योर कि फुल साइज हेलमेट, हाँ, इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक अ लार्ज, लाइक मे बी अ वेगा हेलमेट और स्टड्स हेलमेट तो फिट हो जाएगा, बट लाइक इफ यू आर गोइंग लाइक LS2 और सम ऑफ दिस बिगर हेलमेट्स, एम्प्टी हेलमेट्स एंड ऑल दैट, दे विल नॉट फिट. इवन दिस हेलमेट विल नॉट फिट. And the other thing, and the other reason was, if the question is whether it fits everyone, I would say this is more for an enthusiast than for someone looking for practicality. हाँ, long rides के भी लिए use कर सकते हैं. Like you will not feel tired. It has a very nice wide seat. Cushioning is very good. You are sitting almost your sitting angle is very like almost upright. Yeah, you won't feel any stress on your back. Even if you're riding for 1-2 hours. It should be very stable on high speeds because of it's very the way stable. they have designed it. Yeah, it's very stable. Like I said, again, the weight distribution is really good. You can literally lean it like a bike. No problem whatsoever. I leaned it, like tried to lean it so many times. Tires are very good. The road grip is very good. So yeah, I mean, if you're really an enthusiast and who's also looking to have the convenience of a scooter, this is the bike. So any problems so far? Anything? I mean, in terms of riding, in terms of the way you handle it, in terms of कोई इंजन का आपको ऐसा लगा कि this could have been better, ऐसा कुछ आपको लगा in terms of fit and finish? Oh, quality levels are very good. Overall I really love the ride. The brakes are very good. The front brake, I mean the front tire has the disc brakes with ABS. The rear brake is obviously a drum brake, but still very, very good. You go at 40, you hit the brakes, it's gonna stop. Ride quality is amazing. The only thing I felt was the rear shock absorbers. They're slightly on the stiffer side. So if you're going on a bumpy road, if you're going on like some rocky like terrain, or maybe not like even surface, then you'll feel it because it's like pretty hard. They have given the setting, I think, because of the high speeds, soft रहेगा, then you have that bouncy feeling. Yeah. And I don't think this is adjustable, is it? This is not adjustable. So actually, Yamaha is releasing a lot of accessories for this now. So you will actually get LED turn indicators like with flashers. You can change the shock absorbers for adjustable shock absorbers. I'm waiting for it. I think 500 kilometer पे ना plus service इसका? They said 1,000. But yeah, I mean, so far they've asked me to keep it under 80, so I'm keeping it, trying to keep it under 80. But
the really good thing is you will not feel even a slightest vibration. Is it? Yeah, I mean, you'll just cruise. It's 80, 85 miles, you'll just be cruising. You'll not even feel that the engine is running. And that's the reason, I have gone through many articles, especially I think there was one article on XBHP website where they were talking that, this scooter can be used for long rides along with the pillion, but they had issues with the pillion seat. So अगर आपके पीछे कोई बैठा है pillion seat पे, so did the person sitting as pillion face any issue? कुछ दिक्कत आया उनको? It was not for a long time, but the padding and I mean, while the seat length is okay for a pillion, the padding is not enough. So it's slightly on the harder side. If you see for the driver, it's pretty good. But the pillion, it's like maybe you can use or get a seat padding done or some extra. If you really want to do long rides on this along with the pillion, थोड़ी चीज़ें और है जो मुझे लगा when I sat on the scooter, getting onto the pillion seat a big task है. I think वो आपको भी feel हुआ होगा. It's almost like sitting on a bike. एंड अगेन कीपिंग द लेग्स, पीछे जो बैठेगा उनको थोड़ा सामने पैर रखना पड़ेगा, फुट पैक्स थोड़ा सामने, थोड़ा क्या ज़्यादा ही सामने है. अगर आप नॉर्मल स्कूटर से कंपेयर करो, नॉर्मल स्कूटर में क्या है, आप सामने पैर रखते हो तो आप पीछे वाला जो बंदा बैठेगा, कोई पिलियन बैठेगा, उसका बहुत पीछे रहता है. बट इसमें आप देखोगे तो बहुत ही सामने है. एंड दिस इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर ओनली इंडिया, बिकॉज जब इंडिया के लिए डिज़ाइन होता है तो वी हैव दैट फुट पैक्स, लेडीज फुट रेस्ट वगैरह रहता है. इसमें वो नहीं है. एंड आई एम नॉट श्योर कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरी सा कुछ आएगा जहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट अपन वन साइड जो बैठते हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं. बिकॉज जब मैं यामा से बात कर रहा था शोरूम में, उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ जुगाड़ कर सकते हैं. बट जुगाड़ भी नहीं होगा बिकॉज यू सी दिस साइड, पूरा जो पोर्शन है उसके ऊपर तो जुगाड़ करना मुश्किल होगा. सो दिस इज़ फॉर समवन, अगर आपको पिलियन को लेके जाना है तो यू विल बी सिटिंग बोथ द साइड्स, एक साइड बैठना बहुत मुश्किल होगा. दो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम एज एन इंडियन आई ऑलवेज फील व्हेन आई वांट टू बाई ए कार और बाइक और स्कूटर. माइलेज कितना देती है सिटी में? बट बिकॉज आपने हाईवे पे तो नहीं चला होगा अभी तक. हाँ, so I've tried to check. Average I'm getting somewhere around 40-42. 40-42. You are always below 80, 70, 80. I mean, I didn't rip the bike yet because of the first service, but which is decent enough. I wouldn't call it. If I get 30 mileage, I'm happy with it. 35-40 is very good mileage. I'm pretty much happy with the mileage. The only thing I'm not happy about is the tank capacity. That's the next question I wanted to ask. मतलब एक 155 सीसी का स्कूटर आपने दिया है, इतना पावरफुल आपने स्कूटर दिया है, 5.5 लीटर का पेट्रोल टैंक एटलीस्ट 7 लीटर का या 8 लीटर का रहना चाहिए था. Yeah, I mean they should have done it. I don't know क्यों नहीं करे, or maybe it's because of the design or aesthetic, or I don't know. But वहाँ पे भी अदर कंट्रीज में भी सेम है क्या? Yeah, so this is coming as a CKD unit to India. I mean I'm glad they kept the price lower, but there's nothing, no modification, nothing done for India. Whatever is being sold outside, it's just sending a CKD unit here, they're assembling it, selling here. I asked him कि if you really want to go for long rides, then every 160-170 किलोमीटर आपको फ्यूल फिल करना पड़ेगा. हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई डेली टूरिंग के लिए यूज़ करेगा. ओकेजनली आपको कुछ करना है, कभी जाना है, दैट वुड बी गुड, स्पेशली ऑन वीकेंड राइड, जब जैसे हम लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट राइड्स के लिए. 200 to 300 kilometers आराम से you can do it without a problem. एंड देन आई हैव द सिटी राइड एक्सपीरियंस. जैसे आपने बताया कि यू हैड नो इश्यू विद द वेट, द वे स्कूटर हैंडल्स, तो गर्म वगैरह कुछ होता है? Nothing. I mean, you won't even feel. So the very good part about city riding is it has a auto start stop. Okay. So every time you stop in traffic or every time you are at a signal, the bike automatically shuts off, and then when you just turn the accelerator, it starts. Like I said, the acceleration is quick. So if you're doing like quick overtakes or anything, immediately you're able to. हाँ, कोई tension नहीं है. Like you will more or less stay ahead of most of the vehicles. So then you should be thinking about speed cameras then. But I'm really happy the way it really handles in the city. Yeah, brakes are very good. I mean, because we drive the bigger bikes, right? So you know how the bite of those bikes would be. But yeah, I would compare this like in this segment. Very good brakes. Even Power Drift did a review of this bike on the ride quality and the brakes and everything. Even they were like, they're very impressed with how this bike is done. I own R15 V3 that had issues, but in V4 उन्होंने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है. सो यामाहा सुनता है, नॉट श्योर पहले सुनते था कस्टमर की नहीं, बट अभी तो आजकल तो सुनता है. आई होप कि होंडा भी सुने. सो एंड सस्पेंशन को लेके एनीथिंग यू वांट टू से? Yeah, if they give stock with adjustable, give a stock adjustable suspension, I think that will be perfect for this bike. I don't really see a need for adding
additional accessories also. Because everything more or less, the headlight is LED, the back, the rear, even night riding on this, the lights are very powerful. So you will have zero issues with the riding in the night. तो अगर नाइट में अगर मैं टूरिंग वगैरह लॉन्ग राइड जा रहा हूँ आराम से कर सकते आफ्टर मार्केट कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं नहीं है. Lights are very good actually. Yeah, overall it's a very very good bike. At least till date, I mean, I have not faced any problem. Everything about this bike I really like. इंजन परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए ना, मतलब एज यू सेड कि आई नो इट इज़ द सेम पावर जो आजकल बाइक्स वगैरह में होता है ये सीसी सेगमेंट में, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि यार कुछ समथिंग कुड हैव बीन बेटर एंड द वे इट पुल्स, कुछ आपको ऐसा लगा कि आई नो स्कूटर के लिए बहुत ज़्यादा पावर Both, and I'm really impressed that they actually try to put the same bike engine into a scooter. And the way they tuned it is also very like perfect for a scooter. It doesn't give you surprises. You know exactly how you're going to drive. Initial acceleration is good. After that, the it kind of linearly picks up the speed. And then it nicely stays at one, like you can basically, if you want to just cruise at 80, you just leave, just hold the accelerator and you're just going. तो इजीली 80-90 आराम से क्रूज कर सकते हैं, 100 तक क्रूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आई थिंक वी जस्ट नीड टू गेट ए विंडशील्ड. हाँ, yeah, unfortunately they're not selling it here. I checked from some websites, but a lot of, given that this is a very popular bike in Thailand and Philippines and all these places, they have a lot of accessories for this bike. Those So guys many. are crazy, I'm telling Yeah, you. they have Those like kind of almost things. this height wind screens and a lot of body graphics. But importing from there would be a little expensive. They're not shipping also, because of it looks like they have some coronavirus, some restrictions because of COVID. So they're not shipping as well. I asked a couple of sellers. सेम स्कूटर वहाँ पे यूज़ किया है, सेम स्कूटर यहाँ पे भेजा है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा एक्सेसरीज वगैरह. हाँ, आएगा. ये कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, बिकॉज अब देखो आजकल क्या है, टूरिंग का बहुत क्रेज़ है अपने इंडिया में. टूरिंग जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ों को यामा टारगेट कर रहा है फॉर स्पेशली ये स्कूटर है इसको अगर टूरिंग के लिए, तो दे शुड ब्रिंग समथिंग, बिकॉज 80-90 पे हाईवे पे आप चलाओगे ना, इट्स ओपन हाईवे, तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा लगेगा. Yeah, that's for sure. सो आपको क्या लगता है कितना सर्विस कॉस्ट इसका हो सकता है, जस्ट रफ फिगर? I'm thinking almost similar, given that it's a similar engine and so oil, water, they'll have to top up the coolant if required. So I think more or less it will be the same, because they're basically changing the same quantity of oil and doing the same service. So yeah, I'm guessing it will be somewhere around like the same amount, 1500 to 2000. इवन मुझे लगता है कि अभी यामा शुड लुक इनटू दिस. एवरी 3000 किलोमीटर पे मेरे को R15 का सर्विस करना पड़ता है एंड इट इज़ द सेम इंजन. मुझे लगता है कि एवरी 3 to 4000 किलोमीटर पे कराएंगे तो इट बिकम्स हेक्टिक. वंस और ट्वाइस इट इज़ ओके, बट आपको 2 महीने में एक बार जाना पड़ रहा है. दैट्स व्हेन यू फील लाइक इट शुड हैव बीन अराउंड 5000 किलोमीटर. जैसे नाउ रॉयल एनफील्ड वगैरह दे आर गिविंग सर्विस इंटरवल ऑफ 10,000 किलोमीटर. सो ऐसा कुछ रहना चाहिए, एटलीस्ट 5000 किलोमीटर तो रहना ही चाहिए. पार्ट्स का अवेलेबिलिटी कैसा रहेगा? आई एम श्योर कि बाहर से तो हम कोई सोर्स कर नहीं सकते. Actually, I was calling my बहुत Yamaha showrooms को कॉल किया था, तो they were like दिसंबर में आएगा. अच्छा. And then when you put the story and I saw it, I was surprised. I was like, how did it arrive? So yeah, so given that situation, I think the availability of spares and accessories, I'm sure they would be sending spares as well, because there are now bikes being sold. But उतना जो like the continuously running models का जैसा अपने को वैसा मिल जाएगा spare, most likely I'm guessing it will not be that easy. And should be expensive also little. Yeah, absolutely, because they're all imported, right? Like, all the parts have to be imported. Like if you look at Aprilia, like SR 160 or SXR 160 and some of these latest bikes, I mean, this is the most powerful in its segment right now, even more powerful than SR 160. And so yeah, I mean, if you basically there's no competition for this particular bike in this segment at this point of time. टॉप स्पीड आपने तो बोला कि 80 और 85 के ऊपर नहीं जा रहा. Whatever I've seen in YouTube videos, people have touched somewhere around 120. स्कूटर्स आर नॉट मेंट फॉर स्पीड्स एंड ऑल, इवन कम्यूटिंग बाइक्स वगैरह है, बट जस्ट दैट कई लोग पूछते हैं भाई मैं ये स्कूटर ले रहा हूँ, टॉप स्पीड कितना रहेगा, मैं कितना भगा सकता हूँ. इवन इफ आई टेल देम 120 ये जाएगा, पीपल विल स्टिल हैव, अरे यार इतना बड़ा स्कूटर है, एटलीस्ट 130 जाना चाहिए था. सो पीपल हैव दैट, थोड़ा और एक्स्ट्रा मिला तो अच्छा रहता है. सो एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ लो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं.
एंड दैट्स ऑल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें. जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें. एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच वंस अगेन. Thank you so much, Prakash bhai. Thanks for having me here. So see you in the next video. Bye bye. Take care. Bye.